Stocks weekly analysis and starting things off with Nifty's weekly chart हम लोग देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे ऑब्वियसली एक नॉट सो गुड कैंडल बना है एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टुडेज गैप डाउन ओपनिंग सो और डिग डीप करते हैं बट फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि जो 16500 का जो लेवल है दैट हैज बिकम लाइक अ बैरियर ऑफ सॉर्ट्स सो आई थिंक वील हैव टू वेट until that is cleared. So keen observers will actually also see कि RSI डाइवर्जेंस जैसा है यहाँ पे एक हाई बनाया था यहाँ पे हायर हाई है प्राइस का बट लोअर हाई है RSI का so that is also one observation. Obviously I don't always look at RSI divergences but this is also something that you can sort of infer. Now coming to the daily chart of Nifty हम लोग देख सकते हैं कि yesterday वी स्पोक अबाउट अ पोटेंशियल सिनारियो कि क्या हो सकता है निफ्टी में ऑब्वियसली गैप डाउन तो एक्सपेक्टेड था बिकॉज SGX निफ्टी was negative. So SGX Nifty down था इसके लिए we saw that gap down opening happening and then what we discussed थी शायद यहाँ पे gap down open होगा समझो ये previous close है and then it might just recover a little and that's actually what has happened. Obviously high से थोड़ा selling है like it's pretty considerable. We can see 16500 rejection happening but I think overall it is still not very bad. And हम लोग ने पहले भी actually बात किया था कि RSI जब भी 80 के आसपास आता है it is definitely overbought zone के अंदर technically speaking. So yeah, I think this is all perfectly in line. Now, one level that I would personally be looking out for is actually this level right here. So 16300 के आसपास का जो level है, we can see that this zone has seen a lot of consolidation. When there's consolidation, it means that is possibly where some action was happening, and that is what I would be looking out for. Again, 5 minute chart, we'll just take a quick look to see. 60 minute पे भी आता हूँ. I actually skipped one time frame, but ठीक है. This is what the Nifty 5 minute chart looks like. Possibly a good day for option sellers intraday. Positional अगर option sellers थे, swing option sellers शायद not the best day, but we can see overall within this range itself. So that is what Nifty is showing us on the 5 minute chart. 60 minute chart, just quickly we'll take a look. Not to take too much of time, but this is what we saw. So very flat, extremely flat. Okay, एकदम चपटा ही है. एक घंटे की जो रेंज थी कैंडल की पहले घंटे की रेंज उसके अंदर ही है, which is not a very pleasant sign. We can see hourly chart पे it is consolidating around the 50 moving average. 350 का जो level है, that is where my sights would be set. Now we will come to the weekly chart of Bank Nifty. Okay, weekly chart of Bank Nifty. And what are we seeing here? That same like, subscribe, comment, and share is still here. So yeah, no pressure. If you feel like these videos are adding value, you are free to like, share, comment. No compulsion. If you like it, then please do so. But yeah, now coming back to Bank Nifty's chart, we can see weekly basis pay. Nifty has actually held its ground fairly well. So giving an example, weekly basis pay Nifty is down just 0.5%. Bank Nifty is down 3.14%. Pi percent भी हम लोग बोल सकते हैं 3.14. But jokes apart, this is what we are looking at. So 20 moving averages at 34,200 ish levels. पॉसिबली उधर तक आ सकता है, देखो अगर उसको नहीं वीकनेस ही लग रही है तो. बट अगर डेली चार्ट पे देखते हैं देन वी कैन सी इट इज एक्चुअली जस्ट बिलो द 50 एमए व्हिच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन फॉर बैंक निफ्टी, especially because Nifty is actually above its 20 MA also, I believe. So that's what we are seeing. Now there are multiple ways of looking at it. एक तो हम लोग देख सकते हैं 50 में रिजेक्ट किया है, दूसरा देख सकते हैं RSI 40 अप्रोच कर रहा है. सो आई फील 34,500 इश का जो लेवल है, जो मैंने यहाँ पे कर्सर जिधर रखा है, मैं एक्चुअली मार्क भी कर लेता हूँ आपको. रादर आपके लिए, आपको तो मार्क नहीं कर सकता मैं, बट दिस लेवल इज पॉसिबली वेयर आई बी लुकिंग एट. And on the 60 minute chart we can just see the same level as well. I'll hide the moving averages क्योंकि moving averages थोड़ा scaling बहुत बिगाड़ देता है. But yeah, this is the level that I'd be looking at. So this sort of big cluster that we see is actually what gave Bank Nifty good support, and then if that's broken, ये जो zone है उसके आसपास आ सकता है. Now it's very interesting because for Nifty all of these levels are past bygones एकदम सब सालों बीत गए ये levels आके. बैंक निफ्टी अभी भी उधर ही अटका है. So just shows the extent of underperformance for Bank Nifty. Obviously Nifty से काफी bearish था.
आज के दिन ऑब्वियसली ओवरऑल तो बुलिश ही है सब चीज़, बट आज के दिन थोड़ा वैसा था। नाउ कमिंग टू द टॉप स्टॉक्स एंड अगेन वीकली चार्ट ही देखेंगे फिलहाल। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज कि from an extension point of view, okay, from a fib extension point of view, it's stuck between 2200 and 2120. From an overall broad sort of point of view, we can see that it's almost becoming like a triangle pattern. So अगर मैं ये ड्राइंग टूल दिखाता हूँ, ऐसे और ऐसे ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है, तो वो ट्रायंगल ब्रेकआउट जब आता है, देन possibly we can expect some momentum happening. I think that will be a very interesting thing to see. नेक्स्ट कमिंग टू एच डी एफ सी बैंक, वी कैन सी 1530 लेवल बहुत एकदम स्टिक करके रखा है, दैट्स जस्ट नॉट विलिंग टू change the level at all. 20 MA के ऊपर है, 50 M, that terrible screeching noise, sincere apologies, there was a bike with a terrible brake possibly, but yeah, this is what we're looking at. 50 MA का बाउंस आया था, रिलायंस का मूविंग एवरेजेस नहीं देख पाए थे, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, 50 MA तोड़ा था एंड देन इट इज गोइंग अपवर्ड्स. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट इज इन्फोसिस. इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं 1744 का जो लेवल है, इट इज राइट एट दैट लेवल एज वेल. सो let's see. As of now, though, it isn't. So see, it's facing some sort of hesitation, right? I think 1750 का buyback price है Infosys का, so naturally, थोड़ा सा hesitation face करेगा ही. Happens to be कि उधर fib extension है. I am not sure if this is taking a resistance here, because resistance लेना at such a high level is, not the right word, I would say, but still, let's see how it goes. HDFC जो है, showing us price rejection candle, weak candle, not a very good sign, but RSI has cleared 60, which is a good sign. 2700 के ऊपर है, so I think as long as it's about 2700, things should be okay. Important psychological level है. And let's not forget the all-time high is 2896. So HDFC is actually just one session away. अगर HDFC की सटकी अगर HDFC की सटकी, so it can very easily clear that all-time high level in one session itself. And I'm not exaggerating. That has happened in the past. So keep that in mind. Next stock we're looking at is ICICI Bank. Bank smack at the previous all-time high level here. So 679 का जो लेवल है वो अगर होल्ड कर पाया देन इट्स वेरी गुड फॉर ICICI बैंक. अगर होल्ड नहीं कर सकता देन 665 इज व्हाट आई वुड बी लुकिंग एट. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर लुकिंग एट इज कोटक बैंक. कोटक बैंक ने एक्चुअली काफ़ी कठिनाई फेस कर दी है, ऐसा बोल सकते हैं हम. सो इफ आई जस्ट जूम इन अ लॉट, वी कैन सी इट इज़ एट 61.8, 1700 लेवल्स पे. और ये वाला जो हम लोग का जोन जैसा था वो भी 1700 पे ही है. अगर हम लोग ये वाले रिट्रेसमेंट को हाइड कर देते हैं, सो आई जस्ट हाइड इट, देन वी कैन सी इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 1824. ये लेवल हम लोग ने यहाँ पे ही मार्क कर दिया था एंड 50 MA हैज बिन रिजेक्टेड. नेक्स्ट स्टॉक वी आर लुकिंग एट इज SBI. SBI हम लोग ने कल ही बात किया था कि 405 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर SBI, and it is right there. Happens to be around the 20 moving average also. So let's see if it's able to hold on to it. Overall तो sentiments ने खास नहीं दिख रहे हैं, because today was like a very intense sort of selling day looks like for SBI. नेक्स्ट स्टॉक we're looking at is Axis Bank. एक्सिस बैंक में हम लोग देख सकते हो वो जो 735 का लेवल है उधर पे ही है, मतलब उतना कुछ खास हम लोग ने देखा नहीं है होते. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. नेक्स्ट आई विल जस्ट डू अ क्विक कैपिटल मार्केट स्नैपशॉट ऑन NSE. NSE पे हम लोग बेसिकली जान सकते हैं सेक्टर्स क्या किया. हम लोग ओवरऑल देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 ने काफी गंदा बीटिंग लिया. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आल्सो टुक अ क्रेजी बीटिंग टुडे, एंड विक्स इज अप अबव 14, सो वेरी अलार्मिंग इन दैट सेंस. Sectoral indices we can see FMCG ऊपर था. I think HUL was a top gainer today. 2600, 2600 I think it cleared. Let's see the top gainer. Yes, HUL is the top gainer. Then obviously Britannia is there up 4%. Very good move. Asian Paint, Nestle. I believe Britannia and Asian Paint are two stocks that one of my subscribers has shared. So yeah, and if you're watching this video, then good job. I hope you're sitting on good gains. Nestle closed at a very satisfying 19,500, and the others we can see on the screen.
but majority of the stocks are losers. Tata Steel down 8.85%. I think steel companies ने बहुत गंदी मार खाई है. हिंडाल्को में मेरा होल्डिंग है, so I have also had to bear the brunt of this. So yeah, that is what we're seeing. Tata Motors back at that ideal 280-ish level. So अगर यहाँ से कुछ अच्छा good positive candle दिखाता है, I think it could be a good level. But this is the overall sort of broad market sectoral view. Metals down quite a lot, media down. So overall काफी market breadth जो है वो उतना खास नहीं था. So that is what we're seeing. Tomorrow, hopefully, Anosh and I will record our weekly analysis. So make sure you're staying tuned for that. I hope you have a great weekend. That's it for this one. See you in the next and